So first of all, congratulations for such a sleek, sexy and fully action-loaded trailer. Thank you. बहुत अच्छा लगा. आदि आपसे पहला सवाल है कि ये एक कस्टम बनते जा रहा है कि शर्ट उतारना है. ये फीमेल फैन फॉलोइंग का प्रेशर होता है या स्टोरी की डिमांड होती है? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है. प्रोड्यूसर की डिमांड थी. प्रोड्यूसर की डिमांड भी होती है. बट आई थिंक इफ यू लुक एट इट, लॉट ऑफ एक्शन फिल्म्स, फिजिकलिटी इज एक रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्पेशली इन अ फिल्म लाइक दिस. तो इस फिल्म में तो बनता है, आई थिंक. और अच्छे भी लग रहे हो. कपिल, आपसे एक सवाल है संजना के लिए. इधर मैं यहीं पर हूँ. इतनी प्यारी मासूम से दिखती हैं ये, इनको इतना डेयर डेविल एक्शन वाला अवतार देने के लिए कैसे आपने सोचा? It was a character when we wrote the film, and हम बहुत कि किसको कास्ट करें, you know, how can we make this something different, because हम पहले से ये सोचे थे कि यार आदि is part of the film, you know, इसको for him we are going all the way out to do action, and you know, अब इसके सामने who will be that girl, you know, who will play this character. And we went through a lot of stuff, and I must say, and we finally decided when we saw Sanjana, and they were like, yaar, ye to, we saw her film, and we were like, yaar, Kapil, are you sure that this is the girl? Like, there is something about her that we should definitely go with her. And then it was decided together, yeah, let's do this. Yeah. Hi, Adi, this is Pooja here from Bollywood now. Hi. As you mentioned कि आप बचपन से action films देखते आ रहे हो. So, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है और आपका पर्सनल फेवरेट बॉलीवुड में एक्शन हीरो कौन है? Oh, interesting. Growing up, actually, for me, it was mainly Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan, and Van Damme. I have seen all the whole filmographies, even their very, very bad films that no one should see. And over here, I would say maybe Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, he has such a aura and a personality, and I think he was one of the first that built a physique in our industry, if I'm not wrong, back in the day. So he was always an inspiration growing up, looking at the way that the shape that he was in. So maybe that. हाय आदित्य है सामने आपके सामने. ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में एज ए ओम, उसके लिए किस तरह की तैयारी की आपने, क्योंकि काफ़ी कमाल का लगा वो. थैंक यू. एक्चुअली ये एक 3-4 महीने की प्रोसेस थी. इट वॉज क्वाइट फनी क्योंकि मुझे एक्शन सीखना था. आई हैड नेवर डन आउट एंड आउट एक्शन बिफोर. तो आई डिड 4 months ऑफ मार्शल आर्ट्स, और बॉडी बिल्डिंग भी ज़रूरी था बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, मार्शल आर्ट्स करते हुए मसल लॉस होता है. तो आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग. एक्चुअली मैं बोल दूँ दिन का no, not, I won't bore you with that. But it was basically 2 hours of action in the day and 2 hours of weight training at night. And बीच में हम लोग मिलते थे writing sessions के लिए. तो it was like an Om boot camp in life. Hi, Adi here. This is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. Congratulations for the trailer. It's really, really rocking. And you know, we always loved you as the doomed romantic lover, the fun guy, and now this is the big leap. So really looking forward to it. You know, I was really intrigued by the tagline of the film, which says "the battle within." You know, what's been the biggest battle for you within in your career, and how have you overcome it? I don't know if one can look at it like a battle. It is a tricky. It's a funny job we have. It's unpredictable, and I think the main thing is to be able to make peace with ups and downs and the unpredictability. And I think as in early on in your career, you're not so well equipped to handle it. But as the years go on, you realize that everything is transient, and you just have to be able to stay on the level. You know, if things don't go well or they go really well, you know that you still have to prove yourself the next Friday and the next Friday and the next Friday. So it's just about keeping your sense of self-confidence intact, no matter what happens around you, is, I guess, the biggest, most important thing as an actor. Sharik sir, do you want the film to be released at a proper time on 1st of July, or wait for other factors to clear down, like pandemic? Did the pandemic affect your film in any way? No, I think we are gearing. I mean, we are releasing the trailer today, which means we are very confident for a 1st July release. I think we have films since the last wave have come, and there are enough and more success stories which are there. I think there's this
there's this latent demand for great content and people want to go out. And I think we're providing a film which kind of satiates that. So we are very confident of the product. And so yes, of course, we are looking at a theatrical release on first, and fingers crossed that the cases remain flat or whatever. I mean, but yeah, I mean, there's no concern otherwise. How many screens will you be releasing the film? So I think those details will come as we emerge, but it will be a wide release. It will be a large. I think that closer to the time we will be able to tell you exact numbers. Sir, will you want to change your image from a romantic hero to action hero? I guess the idea is that with this film, but I don't want to get stuck with trying to just do one thing. I think it's important for an actor to keep pushing yourself and trying to do different things, so that you don't get too comfortable in any one genre. So while this is something that I feel like is the start of many, I don't want to do only action films. I'd like to do a variety, if possible. रफ़ी मोहम्मद शेख दबंग दुनिया इंदौर से। जहाँ तक ट्रेलर देखा हमको इतना समझ में आया कि एक पिता के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये क्या है फिल्म में कुछ? कपिल थोड़ा बता दो। वो तो आपको आके देखना पड़ेगा सर। नहीं वो तो समझ में आ रहा है थोड़ा, लेकिन हाँ नहीं सर, अगर वही जितना समझ में आया वही पॉइंट है अभी के लिए। उसके बाद 1 जुलाई को सर। 1 जुलाई। Hello, this is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. 2 questions, one to Sanjana and then to Ahmed Bhai. Sanjana, how did you prepare to get into this role? Did you go through action workshops? Did you go through acting training, diction, etc.? And who have been your own ideals while you grew up and reached this stage from rock star till here? Thank you for your question, sir. To play Kavya, I did have to go through a ton of training because she's a girl who can totally take care of herself and she doesn't need any man to kind of fight for her, and she can fight for others. But being a dancer since I was a little girl, I think really set the base for me to kind of be able to pick up choreographies, because while I used to train, I used to feel like an action choreography and a dance choreography is similar. It's about timing, it's about hand-eye coordination. What I did have to learn was, of course, hand-to-hand combat and some amount of weapon use. Because Ahmed sir and Kapil were very sure that Kavya is going to fight in this film. And she's gonna, do what all the boys out there are doing. So I had a blast actually training, and my dad's been a black belt, a karate black belt. So when I was a little girl and I used to come back from school, he used to be kind of practicing on our chat and make me throw some punches and kicks. And thankfully those came in use a little bit. So also a little bit about the acting side. Right. So the acting side, sir, I stumbled into acting with Rockstar when Imtiaz found me in my school while I was doing a dance performance. But being a Delhi girl, I've spent my life in theatre in Delhi, on stage. In Delhi University, we have a very vibrant theatre culture. And I've been working since I was 13 years old, both on stage and in film. So the acting part, I am relatively more confident about, and I've spent a lifetime honing it. So that for me in this film was the easier part. I had to focus more on the action because that was new to me. But obviously there's an endless growth that lies ahead of me. But for the acting bit, not as much. Not as much. Who are your idols and who are your idols? My idols are many. I'm a nerd, so I've read Michelle Obama's book Becoming, it's like my bedtime story. I don't know how many times I've read it. And I don't think that as actors, your idols necessarily need to be other actors. But growing up, Vidya Balan and even Taapsee, they've kind of paved the way for us women in cinema and done things that really make it easier for us as younger female actors, The kind of paths that I'm doing today,
I don't know if I could have done 10 years ago. And that's because of the bold steps that they've taken. So I really do look up to them. थैंक यू। अहमद साहब, छोटा सा एक सवाल आपसे। जी बेशक। जब निर्माता प्रोड्यूसर खुद ही एक्शन डिज़ाइनर भी हो, तो किस तरह से वो जिम्मेदारी निपटी है? क्योंकि आपके एक्शन डायरेक्टर तो परवेज़ शेख साहब हैं, तो परवेज़ शेख के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। और आप एज एन एक्शन डिज़ाइनर और प्रोड्यूसर तीनों जगह किस तरह से ये जुड़ा, किस तरह से ये बना? क्योंकि एक्शन ही मेरे ख्याल में फिल्म का मेजर हाईलाइट रहेगा और होना भी चाहिए जिस तरह का हमने देखा। देखिए, मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ पेशे से। सो 25 साल कोरियोग्राफी कर करके हमें वो तजुर्बा आ जाता है कि हाउ डज अ डांस लुक। जब एक एक्टर डांस करता तो फुल फिगर में खूबसूरत कैसा दिखे, तो उससे मैंने आई जस्ट स्वॉप्ड टू एक्शन। तो जब मैंने अपनी फिल्में डायरेक्ट की हैं तो उसमें कंसीव करता था मैं पूरा एक्शन, एंड आई शुड डेफिनेटली गिव इट टू द एक्शन डायरेक्टर। एंड परवेज शेख आज टॉप एक्शन डायरेक्टर है हमारे बॉलीवुड के, तो नोबडी बेटर देन हिम। एंड जिस तरह परवेज शेख ने पूरी एक्शन को एक दर्जे पे ले गए हैं, दैट इज़ जो विजन था मेरे माइंड में, उनको मैंने जो कहा, ही डिड इट। बट दूसरा हाथ मैं दूंगा, कपिल हैज़ बीन ही इज़ बिलोंग इन टू एन एक्शन फैमिली। सो उन्होंने बचपन से एक्शन देखते हुए बड़े हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने बचपन से, मेरे डैड डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरी करते हुए देखा है, किसी के डैड बिजनेसमैन है तो बिजनेस करते हुए देखा है, इनके डैड एक्शन डायरेक्टर है तो इन्होंने सिर्फ तोड़ फोड़ देखा है। तो मुझे इतना पता था कि मैंने जो डिज़ाइन किया है वो परवेज शेख को तो बोल दिया हूँ, वो कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ वर्मा साहब भी हैं। सो वरना है तो फिर डरना क्या है। सो इन्होंने भी बोला सर मैं भी थोड़ा फोड़ दूँ, मैं बोला फोड़ो। एंड चूँकि शारिक साहब थे टू सपोर्ट अस, सो दैट वेंट वेल। बट इस फिल्म में एक्शन अपनी जगह ज़रूर है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेरे राइटर्स को, वो है राज सलूजा और निकेत पांडे। उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को लिखा है एक लेखक की तरह कि जब आप देखेंगे, जैसे आपका सवाल था लड़ाई किसके लिए, बाप के लिए है, देश के लिए है। यू नो, हम कहते हैं देश मेरी माँ है, ओके। तो इस फिल्म में ओम की लड़ाई 3 चीज़ से है, अपनी याददाश्त से, अपनी बाप की जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसे मिटाना है, और देश की एक बहुत बड़ी गौरवशाली चीज़ है उसे वापस लाना है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो टॉप टू बॉटम इज 100% और उसकी मेमोरी इज 0%, एंड देयर इज अ ह्यूज इमोशन ऑन हिम, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कल है जो अपनी माँ को वादा करता है कि मैं ये सब निभाऊंगा एंड मैं खरा उतरूंगा अपने प्रॉमिस पे। तो ऐसी औलाद हर माँ को मिले, हर देश को मिले। दैट्स द फिल्म ऑल अबाउट। लेकिन अहमद सर, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि एक सैनिक होने के लिए सैनिक बनना भी पड़ता है, जो आदित्य ने बनकर दिखाया है, पैरा कमांडो। तो आदित्य से जानना चाहेंगे पैरा कमांडो की लाइफ उनके लिए कितनी हेक्टिक रही। गोपाल फ्रॉम दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर, जयपुर। Yeah, I think while I did have a boot camp for Om, it was not that tough. As tough as the lives of a para commando. I think YouTube पे देखने मिलता है ऐसे videos बनाते हैं आजकल where they show you the lives of these para commandos, and that is extremely tough because they are actually risking their lives. They're risking their lives for honor, for principles, for the country, and they have a lot to sacrifice, and their families as well. So I can't even claim to understand what that would feel like. I'm just been an actor trying to portray what they go through. So in all honesty, I don't know, but all respect to what they do, you know. Hi, Sanjana, Rashita here from Peeping Moon. So my question to you is that earlier, there was a certain notion that women can't do action in films, and we didn't see that part for a very long time. We saw heroes doing action and women coming in as the leading ladies, but just doing the acting bit. Now, of course, we see you going all out with the action. So do you see this notion changing with new age actors like yourself coming into the film industry and sort of breaking those stereotypes? You know, I hope so. But this one doesn't have anything to do with me. It only has everything to do with our writers and Caps and Ahmed sir, because
it's all about the vision, right? It's all about believing that a girl can also do this. They believe that, and they believe that she can contribute equally to Om's journey. And I don't know why nobody believed that 2 years before us or 5 years before us, but I hope that for years hereafter they do. Because all I can tell you is that as a girl, it's mad fun. It's mad fun, and it's liberating to a whole other level. Okay, got it. But my point is, you said they believed in you, but I'm sure you believed in yourself as well, and that's why you opted to do this role. So, She came with the flying kick in the office. ऐसा उड़ते हुए आई है सर. इतना belief था. And I think you've been a topper, na? In school, you've topped everything. So I think everything she puts her mind to, I think she aces. So I think मुझे you would see that. शारिक साहब बोलते थे यार इतना करा रहे हो लड़की टूट ना जाए. मैं बोलता था हाँ I don't know कर रही है, कभी यहाँ क्रैम्प आ गया, कभी यहाँ मोच आ गई, कभी बैक पुल हो गया. And she was actually ये but जब सेट पे आके she did the action and I was like संजना. हमको लगता था she's a petty little pretty, I've seen her small. Suddenly she got into it, तो it's अंदर था बहुत. ब्लैक बेल्ट की बेटी है तो. Okay, perfect. All the very best to the entire team. Thank you. And I would just like to mention one thing कि आप इसमें देखो जैकी श्रॉफ सर हैं who's playing the father. You have आशुतोष राणा साहब. Then you have Mr. प्रकाश राज. तो गुणी एक्टर है, घाग एक्टर है. तो वो सब ने अपना रोल इतना अच्छा निभाया है कि they have actually completed the film. जैसे एक्शन की बात हुई थी तो acting wise also we have got a big cloud of great actors and they all have done a fantastic job, even Prachi Shah, to everyone. So I think it's a complete cinema. Sir, hello. Hello. जी पूछे. हाँ सर. सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ओम द बैटल विद इन, तो इन रियल लाइफ आप लोग के अंदर भी क्या क्या बैटल है और आप लोग कैसे लड़ते हैं उससे? किसके लिए सवाल? For me, सुबह जल्दी उठना मेरा सबसे बड़ा बैट है. Waking up in the morning for a 7 a.m. call time is the biggest battle within for me. Sanjana? right now, I'm shooting in the mountains, so breathing in less oxygen currently is a great battle, honestly. I'm trying to just breathe. For me, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है अभी. So that's. और गाना शूट करना है. हाँ, गाना शूट करना है. हाँ, और लिरिक्स याद करने हैं. तो काफी बैटल्स है. बैटल्स ऑलरेडी चालू है. और मेरे लिए है कि एक लड़ाई को जीतने के लिए उसे बार बार लड़ना पड़ता है. एक पिक्चर को हिट बनाने के लिए उसे बार बार बनाना पड़ता है. एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बार बार इंटरव्यू देना पड़ता है. हर चीज करना पड़ता है. सो बैटल इज ऑन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स. कि लंच टाइम पे भी बैटल है, खाना खा लो जल्दी से. घर में से फोन आया, रात को खाने में क्या बनाऊं, वो भी बैटल है. सो इट्स अ बैटल एवरीवेयर, यू नो. Everywhere. Hi Sanjana. Sorry, हम लोग के लिए तो हर फ्राइडे बैटल है यार. We got to release every Friday, so we are battling. मैम आपके लिए आप भी जवाब दीजिए. For you. मेरा कोई बैटल ही नहीं है. ये देखो बात, इसे कहते हैं जवाब. All right, we'll just take 2 last questions, right? Hi Sanjana, Akriti here from Absolute India News. Hi. Sanjana, I want to ask, you are doing action for the first time. What was the most challenging part, and did you sustain any bruises while shooting for this? The most challenging part, I think for me, was explosions. Yeah, I'm really bad with them. If anything explodes in front of me, I just start running away. So She just hid behind Adi. इतनी बड़ी दीवार. Hide behind him, and then there are shots where I've left the frame. So I've been a very expensive actor to my producers because many a helicopter has had to be blasted. But yeah, what else? What did you ask? She did twisted her ankle in My in knee, the fight but that's an old injury. Yeah. While shooting in the house. So yeah, that happened once. वो तो होता ही है. That's bound to happen. Yeah. Well, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि पिक्चर सुपर डुपर इन्फिनिटी हिट होगी. Thank you so much. ये मेरी That's दुआ है. blessings. Thank you so much. Well, मैं भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से हूँ. मनीषा दुबे, प्रभात किरण से.
आदित्य से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं, और उसके बाद आप सब लोगों से भी। आदित्य, ये जो पोस्टर देख रही थी ना मैं, ऐसे वाला ना, तो मतलब यहाँ बैठे और वो पोस्टर में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये आप ही हो। तो ये ऐसा वाला जो है ना, ये किसको देख के आता था? और कहते ना, अंदर एक कोई आग होती है जो कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है। ऐसे एज एन एक्टर ना, ये मजाक की बात थी, पर क्या ऐसा अंदर कुछ था जो इस फिल्म के जरिए बाहर निकला है और आपने पर्दे पर? जी, एज एन एक्टर यू हैव टू फाइंड इमोशंस व्हिच आर नॉट देयर इन द रूम. तो कभी कभी मेमोरी यूज होता है, तो आई हैड टू थिंक ऑफ सम ओल्ड थिंग, और उसका नाम मैं नहीं लूंगा. तो ले सकते हो, छापूंगी नहीं. नहीं आज नहीं. बाद में बात करते हैं. वेल, आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं. क्या ऐसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहे जबकि लगा कि बहुत क्रूशियल है, बहुत डिफिकल्टी, और कैसे होगा? क्या ऐसा कुछ आया आप सभी लोगों की उसमें ड्यूरिंग जो आपने इसकी शूटिंग करी उसके? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी, पेंडेमिक आया, और हमने जब शुरुआत की थी, हमने एक्चुअली पेंडेमिक के बीच में शूटिंग शुरुआत की थी, और बहुत स्ट्रेस था, बट फॉर्चुनेटली किसको भी द एंटायर क्रू वाज हेल्दी, और हमने फिल्म ये बहुत आराम से ख़त्म की. एंड वी हैड, बस पेंडेमिक का स्ट्रेस था, बट हाँ, इट वाज अ बिग स्ट्रेस बिकॉज हमारे पास क्रू स्ट्रेंथ बहुत कम थी, और हर डिपार्टमेंट के सिर्फ 1 या 2 लोग अलाउड थे, एंड प्लस मेकिंग अ बिग एक्शन फिल्म लाइक दिस. हाँ, तो थी बैटल्स थी फिल्म में भी, बट हो गया. अहमद साहब जी, इधर राइट साइड, आपके राइट साइड में हाल ही में आपने 2 फिल्में की जो म्यूजिक बेस्ड थी काफ़ी, देहाती डिस्को एंड हीरोपंती 2. बहरहाल इस फिल्म में म्यूजिक को आपने कितना महत्व दिया है? देहाती डिस्को मेरी फिल्म है, बिकॉज वो मेरे दोस्त की फिल्म है, गणेश आचार्य की फिल्म है, मेरी नहीं. एंड इस फिल्म में म्यूजिक, देखो आदित्य को लेके आप म्यूजिक का स्ट्रेस नहीं ले सकते, बिकॉज इनकी हर म्यूजिक चलती है. सो आदित्य रॉय कपूर एंड म्यूजिक आर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड. सो इसमें हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज मेहनत लग रही थी टू डू एक्शन एंड पुट हिम लाइक दिस, जैसे मैम ने भी कहा. तो ये के लिए बहुत स्ट्रेस था, बट लकीली ही इज़ अ बॉय, आई कैन से, जो हम बोलते हैं ना बेसिक लैंग्वेज में घुसता है, उसको घुसाना नहीं पड़ता है. ही गेट्स इनटू इट एंड ही इरिटेट्स यू टू अ लेवल ऑफ, यू कैन पकाओ यू और आपका ऑमलेट बन सकता है. बट वो इतनी अच्छी बात है, यू रियलाइज लेटर कि ही इज नॉट पकाइंग, ही इज पकाइंग हिमसेल्फ मेंटली. तो वो खुद इतनी बेहतरीन तरीके से इसमें आ जाते हैं. सो अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोग का गाना शुरू हो जाएगा, 2 गाने हैं बहुत खूबसूरत फिल्म में. आज एक और गाना शूट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी आदित्य रॉय कपूर स्टाइल ऑफ अ सॉन्ग. मज़ा आएगा, यू विल लव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म ऑल्सो. सो दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी. तो एंड म्यूज़िक की बात रही तो एवरी फिल्म इज़ म्यूजिकल. एक्शन हो तो म्यूज़िक है, फैमिली है तो म्यूज़िक है, इंडियंस आर म्यूजिकल. तो म्यूज़िक तो अच्छा ही है फिल्म का. Cool है, thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. I think सब कुछ कवर कर लिया हम